Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel, Learning Biology Online, and I am Dr. Asad. And with my specialty in the subject of biology, I will be discussing a very important microscopic organism known as the viruses. So, in this lecture, we will discuss the basics relevant to the viruses, that includes their discovery, their characteristic features, and how we can classify them on the basis of some of their characteristics. So by the end of this lecture, we hope that you will be able to understand what viruses are, when they were discovered, and we will also highlight some of their important characteristic features and their structural variations in order to classify them into different groups and subgroups. Starting off with the definition of viruses, that are microscopic infectious agents that can replicate when they are present in any living organism, which means that obviously these are those microorganisms that are always going to be infectious, which is not the case in case of the bacteria, because the bacteria and they can be human friendly or infectious causing as well. Before going towards the structural and characteristic features, we will be discussing the discovery of the virus. So the word virus is taken from the Latin word venom, that means a poisonous fluid, and in the late 19th century, at the time of Louis Pasteur and Robert Koch, the viruses, they were considered as a poison that cause a disease or death of any patient in which they are going to cause a disease. In the late 19th century, somewhere in 1892, a Russian microbiologist F.Sc discovered certain microscopic agent that cause a mosaic disease in tobacco plant, and he also found out that those microscopic agents, they were filterable, which means they were able to pass through specific sort of filters, which was a unique characteristic that he observed in case of the microscopic organisms. So the same filterable agents, they were also observed in causing disease in humans, such as yellow fever and also hand, foot and mouth disease. And then later on, a scientist Stanley basically formed a crystalline form of the tobacco mosaic virus in 1935, and this is how first time the tobacco mosaic virus was identified as a virus at real time. Now coming to the characteristic features of the viruses, so you can see the range of the size in which they exist. So 250 nanometer is the size of the pox virus, and probably the smallest one, the parvovirus, is around 20 nanometer in size. So they are around about 10 to 1000 times smaller in size as compared to a bacteria, and that is why they are only visible under an electron microscope. Another very important characteristic feature of virus is that they are intracellular parasites in nature, which means that they require association with a living cell to come into existence and perform their infection. So they lack their own cell organelles required for the metabolic activity. So that is the reason why they always require a living host to complete their life cycle, and they are always infectious in nature, and that is one of the reasons why they are able to resist many broad spectrum antibiotics as well. वायरस की स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन की तरफ जब हम आते हैं, तो अब स्पेसिफिक वायरॉन, इट इज़ composed of two components: a nucleic acid, that is the genome of the virus, that may be an RNA or a DNA molecule that is covered by a protein covering known as the capsid. So this capsid is made up of number of small protein units known as the capsomeres. So the number of capsomeres that unite to form a capsid, that basically vary in different viruses. तो यहाँ पे आप example देख सकते हैं कि 162 and 252 capsomeres exist in case of herpes and adenovirus respectively.
इसके अलावा और जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं वो ये हैं कि कभी कभार वायरसेस के इर्द एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी एग्जिस्ट करती है दैट ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कैन बी लेबल्ड एज एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। दूसरी तरफ फिर जब हम इनकी शेप्स के ऊपर आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशंस हमें मिल सकती हैं डिफरेंट शेप्स की, जैसे कि हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स कोट की हुई हैं, आइकोसाहेड्रल एंड स्पाइरल। तो स्पाइरल तो ऑब्वियसली जैसे एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हेलिकल, उसी तरह से दे कैन बी फाउंड इन अ हेलिकल और अ स्पाइरल शेप। आइकोसाहेड्रल मीन्स दैट द बैक्टीरियल the viral structure, it has around 20 faces, and even they are found in spherical structure or organization as well. So if you want to see the different types of viruses and the shapes in which they exist, you can see over here how the different shapes of the viruses they are formed. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलर या स्फेरिकल वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा, F.Sc, रोटा वायरस, इसके सरफेस के ऊपर आपको कुछ स्पाइक्स नज़र आ रहे होंगे. दीज आर बेसिकली द प्रोटीन्स और द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस थ्रू विच दे अटैच टू द होस्ट सरफेस. यहाँ पे अगर आप बैक्टीरियोफेज को देखेंगे तो इसका जो सरफेस होता है दैट इसका जो हेड वाला पोर्शन है स्पेसिफिकली दिस इज़ आइकोसाहेड्रल, मीन्स इट हैज़ 20 फेसेस. इसके अलावा आपको ईबोला वायरस जो है वो स्पाइरल या हेलिकल फॉर्म में नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस that may contain a different genome, they exist in different shapes also. So वायरस की हमने अभी तक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पढ़े हैं, तो इसी की बेस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो अगर हम इसको जीनोम की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली वी नो दैट दे आर आइदर कंटेनिंग अ डीएनए और एन आरएनए मॉलिक्यूल. तो डीएनए भी इनमें आइदर इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड वाले वायरसेस होते हैं दे आर अनएनवेलप्ड, एंड अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ देम इज़ द पैरवो वायरस, जिसका कि ऑलरेडी हमने प्रॉबली साइज़ भी देखा था कि दैट वाज द स्मॉलेस्ट विद 20 नैनोमीटर साइज़. डबल स्टैंडर्ड में वायरसेस कैन बी एनवेलप्ड और अनएनवेलप्ड, जिसमें कि एनवेलप्ड वायरस जो है दैट इज़ हर्पीज एंड द पॉक्स वायरस, एंड द अनएनवेलप्ड केस वी हैव एडिनो एंड पेपिलोमा वायरस. तो एनवेलप्ड और अनवेलप्ड में जो ये एडिनो और हर्पीज वायरसेस हैं, इसके हमने कैप्सोमियर सब यूनिट्स के बारे में पढ़ा था कि the number of capsomere in their capsid also varies. RNA टाइप की तरफ अगर हम आते हैं तो we again have enveloped, unenveloped and double capsid viruses, जिसमें कि हमारे पास कोरोना वायरस है दैट इज़ एनवेलप्ड, पर वो मिक्सो वायरस है. इसके अलावा अनएनवेलप्ड में पिकोमा वायरस एंड डबल कैस्पिड रियो वायरस. तो ये आप देख सकते हैं कि जो अभी जो डिज़ीज़ बड़ी पेंडेमिक डिजीज़ जो अकर हुई थी दैट वाज कोरोना वायरस, इट इज़ एन एनवेलप्ड आरएनए वायरस दैट हैज़ बीन सच अ पेंडेमिक and caused its effect all over the world in different countries as well. So this is how you can classify the viruses on the basis of their genome. इसके अलावा हमने शेप्स पढ़ी थी, तो शेप्स की बेसिस पे भी हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. द रॉड, स्फेरिकल, टैडपोल एंड द स्पाइरल शेप. सो यू कैन आल्सो सी द एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एज वेल, जिसमें कि आगे चल के हम बैक्टीरियोफेज को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वायरस and a bacteria. So पहले हम पढ़ेंगे कि how this bacteria enters the virus and incorporates itself into it, and then how it causes a disease. So this tadpole shape bacteriophage virus, it's of great significance as well. This is the end of our lecture in which we have discussed the basic structural and functional components of a virus and their classification as well. So do like our video if you have been able to understand such basic concept of virus and their discovery as well, and share it with your colleagues if you think it can be helpful for them as well. And in the comment section do mention if you have any question regarding the topics that we have covered in the video. Last but not the least, do not forget to subscribe to our channel
and click the bell button so that you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.